नॉट करेक्टली मैच्ड। कंपनीज एक्ट मतलब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8070 ये सही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 सही है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज करेक्ट ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 करेक्ट, रेगुलेट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8070 इनकरेक्ट है। 1872 it was enacted in 1872 and forms the foundation of contract law in India. Partnership Act 1932 correct, governs formation, functioning and dissolution of partnership. 1932 Sales of Goods Act 1930 deal with sales and purchase of goods. Knowledge of these acts is crucial as they form the backbone of commercial and business laws in India. The Indian Contract Act 1872 correct year of enactment. अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Which one of the following is not correctly matched? Prevention of Sedition Meeting Act 1908. Prevention of Sedition Act 1938. 1908, sorry. Prevention of Sedition 1908. Was enacted in 1907. Prevention of Sedition Meeting Act 1907. Explosive Substance Act 1908. Criminal Law Amendment Act 1908. Newspaper Incentive to Offence Act 1908. यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907 था। 1907 The act empowered the government to prohibit public meetings like to promote sedition and public disorder. Public disorder. Other act, Explosive Substance Act 1908, deal with punishment for causing explosion like to endanger life. Indian Criminal Law Amendment Act 1908 gave powers to suppress revolutionary movement. Newspaper Incentives to Offence Act 1908 restricted the publication of seditious material enacted during the colonial period to suppress political dissent and revolutionary activities. ठीक है, arrange the following act in their chronological order. Lex Loci Act 1850 allows Hindus who converted to Christianity to inherit ancestral property. लेक्स लॉसी लॉ जो था 1850 में, उसने कहा कि जो हिंदू क्रिश्चियन में बदल जा रहे हैं उनको उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 रिफाइंड राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स टू कर्ब एक्सप्लॉयटेशन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 raised the age of consent for sexual intercourse for girls 10 to 12 years. Age of consent act 1891 में sexual intercourse for girls 10 to 12 years. ठीक है। Indian University Act 1904 focused on regulating higher education. Significance: these acts reflect the colonial states' attempts to regulate Indian social practices
and education. Okay. With reference to sorry. With reference to India, consider the following pair. Unauthorized wearing a police military uniform official secret at 1923. अगर मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म अगर पहन रहे हैं या अनऑथराइज्ड वेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है. 1923 प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेज एंड पुलिस. ओके. knowingly misleading a police military officer, Indian Evidence Act 1872. नहीं, एविडेंस से रिलेटेड है. मिसलीडिंग ए पुलिस ऑफिसर इज नॉट कवर्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इंडियन पेनल कोड डील्स विथ मिसलीडिंग पब्लिक सर्वेंट्स. आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 पेनलाइजेस सेलिब्रेटरी गन फायर. अच्छा, दैट इंडेंजर्स ह्यूमन. मतलब अगर आप खुशी में एकदम गोली वोली चला रहे हैं तो ये आपके लिए खतरा वाला मामला है. आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से. डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेक्शन ऑफ क्रिमिनल एंड पब्लिक सेफ्टी लॉज इन इंडिया. फिर से देख लिया जाए. लेक्स लोकीला 1850 में आया. बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में. एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन. Unauthorized wearing a police military uniform, the official secret at 1923. Knowingly misleading the police military officer, Indian Evidence Act 1872. Celebratory gunfire endangering safety, the Arms Amendment Act 2019. ठीक है. The Disaster Management Act was made in 2005. अभी देखिए आज ही फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है. ठीक. तो अब ये है कि हर ज़िले में लगभग एक डिजास्टर वो वाला मामला रहेगा. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर एंड रिलेटेड मैटर्स. इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड केम इन फोर्स इन 23 December 2005 आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. स्ट्रक्चर क्या है? द एक्ट कंटेन्स 11 चैप्टर्स एंड 79 सेक्शंस टू इस्टेब्लिश ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. कौन मतलब एनडीएमए क्या रहता है? प्राइम मिनिस्टर हेड रहते हैं. टू इंश्योर ए होलिस्टिक एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस. Provide the legal framework for disaster management in India, focuses on community-based approach for disaster preparedness. The Act emphasizes the proactive approach to disaster management rather than a reactive response. reactive approach रहता है पूरा एकदम. ठीक. The Disaster Management Act was passed by the Parliament in India in 2005. RTI Act भी इसी समय आया था. The Act was passed in 2005 and is a comprehensive law that lays down institutional mechanism for drawing up and monitoring the implementation of disaster management plans. It replaced the earlier fragmented approach to disaster management. It also empowers central and state government to take effective steps to mitigate disasters. The National Disaster Management Division in India is the nodal division of Ministry of Home Affairs of Disaster Management. Who is ex officio chairman of National Disaster Management Authority? तो प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न आता है वो होम अफेयर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. ठीक है. हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? Prime Minister. The National Disaster Management Authority is headed by Prime Minister of India as ex officio chairman. NDMA composition can have
up to 9 members, including vice chairperson. The tenure of each member is 5 years. Responsibilities: formulating disaster management policies, approving the National Disaster Management Plan. The Prime Minister's leadership ensures the national level coordination during disasters. कितने क्वेश्चंस हैं? 85, 86, 87 क्वेश्चंस हैं. कोई नहीं. Which of the following give legal basis to extraordinary power exercised by Government of India during lockdown? तो ये मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इन दोनों ने वो किया था. ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोक्ड द फॉलोइंग: डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और provided the legal framework for enforcing lockdown restriction and regulation to combat the pandemic, allowed for national level coordination to mitigate the crisis. Epidemic Disease Act 1897, an old colonial era law enacted to tackle epidemics. Epidemic Disease Act 1897. Empowered the state government to take special measures. Why not the other act? Mental Health Care Act 2017, deal with rights of person with mental illness. Enemy Property Act 1968, deal with properties belonging to enemies and enemy firms. एंड एनिमी मतलब जो भारत से जाके दूसरी जगह बस गए हैं, पाकिस्तान या दुश्मन देश में पाकिस्तान में बस गए हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 19 देखिए एक 2000 फॉरेस्ट ड्वेलिंग वाला आया था, ये 2006 में आया था, लेकिन 1980 में आया था. और वाइल्ड लाइफ वाला 1972 में आया था. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था. वाटर शायद 1981 में आया था, एयर या वाटर. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 was enacted to address rapid deforestation and conserve forest. Objective: restrict the diversion of forest land for non-forest purposes. Regulate the de-reservation of reserved forest. De-reservation of reserved forest. Prior approval from central government for the use of forest and land. अच्छा की प्रोविजन क्या है? Prior approval from central government for the use of forest and for non-forest purposes. Ensuring compensatory afforestation in case of land diversion. मतलब एफॉरेस्टेशन आपको करना ही पड़ेगा. It marked a shift of exploitation to conservation in forest management. It is a critical legal measure to combat environmental degradation. Disaster Management Act 2005 became a key legislative tool during the pandemic, showcasing its relevance and decading after enactment. The NDMA's structure and leadership ensure a centralized approach during disaster, aligning with the national policy of disaster management. The use of both Disaster Management Act and Epidemic Disease Act during the lockdown demonstrated a synergistic application of laws to address an unprecedented crisis. ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में शायद ये था. हाँ 1897 में. The Forest Conservation Act 1980 reflect India's commitment to sustainable development and forest conservation. The Government of India passed Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act. In which of the following? Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001 में. Plant Variety and Farmers' Right Act 2001 में. 2001.
The Protection of Plant Varieties and Farmer Right. Farmers' Rights Act was enacted in 2001. It was introduced to establish an effective system for protection of plant varieties and right of farmer and plant breeders. 2001 में आया था. The act encourages the development of new plant varieties while protecting the interest of farmers. Farmers have right to save, use, sow, re-sow, exchange, share or sell their farm produce including seeds. The act also grants plants breeders' right to promote investment in research and development, aimed at fulfilling the obligation under the TRIPS agreement. Provide a system where intellectual property rights are balanced with farmers' rights. India is one of the few countries to legislate such a unique blend of breeders' and farmers' rights. Consider the following. Aadhaar metadata can't be stored for more than 3 months. ऐसा नहीं है. State can't enter into any contract with private corporation for sharing Aadhaar data. बिल्कुल सही. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. नहीं, जो जहाँ consolidated fund का इस्तेमाल होता है वहीं. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of consolidated fund of India. ये सही है. As per Supreme Court judgment in Aadhaar case 2018, the Aadhaar authentication data can't be stored for more than 6 months. 6 महीने से अधिक नहीं रखा जा सकता. 6 महीने से अधिक, 3 महीने से अधिक नहीं, 6 महीने से अधिक. The Supreme Court has prohibited private corporation from accessing Aadhaar data for commercial purposes. Supreme Court has prohibited private corporation from accessing Aadhaar data for commercial purposes. The Insurance Regulatory and Development Authority of India clarified that Aadhaar is not mandatory for insurance. As per the judgment, Aadhaar is mandatory for welfare scheme funded by Consolidated Fund of India. Aadhaar Act 2016, upheld by the Supreme Court, mandates the use of Aadhaar for welfare schemes but restrict its use for private commercial purposes. Privately नहीं यूज कर सकते. Consider the following statements. Aadhaar card can be used as proof of citizenship or domicile. नहीं. Once issued, Aadhaar number can't be deactivated or omitted by the issuing authority. ऐसा कुछ नहीं है. मृत्यु हो जाएगी तो वोटबंदी करना पड़ेगा ना. According to Section 9 of Aadhaar Act 2016, an Aadhaar card is only a proof of identity. सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है, not proof of citizenship और domicile. सिर्फ जो है आइडेंटिटी, हम इसको वो कर सकते हैं, अपना मतलब पता वता या डोमिसाइल वाला मामला नहीं कर सकते. एज पर Section 23G of the Act, an Aadhaar number can be deactivated or omitted under certain circumstances by unique identification of Authority of India UIDAI. Significance क्या है? Aadhaar serves as a digital identity for resident but does not confirm nationality. मतलब ये आधार जो है डिजिटल आइडेंटिटी तो प्रोवाइड करती है लेकिन ये नेशनैलिटी कंफर्म नहीं करती है. द सुप्रीम हैज़ क्लियरली सेड दैट आधार इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. पासपोर्ट बताता है ना नेशनैलिटी, आधार कार्ड नहीं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था ये. To be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess a minimum qualification laid down by concerned state council of teacher education. बिल्कुल से अरे नहीं, अभी मतलब देखा जाएगा आगे. As per RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test. सही है. Conducted in accordance with National Council of Teacher
एजुकेशन काउंसिल गाइडलाइंस सही है। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट। नहीं। देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इज लेट डाउन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नॉट स्टेट काउंसिल। अच्छा, ये जो है ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बताएगा कि क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। TET is mandated as per NCTE guidelines for teaching primary classes. Most teacher education institutions are under private management, not state government. Context देखा जाए, RTE Act 2009 ensure that children above 6 to 14 years have the right for free and compulsory education. Teacher eligibility test is a mandatory qualification for appointment of teacher in school. और ये कौन तय करता है? NTCE। कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इस्टेब्लिश्ड। तो ये 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, FSSAI नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मैंडेट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फूड कमीशन अंडर। अच्छा, स्टेट फूड कमीशन 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 मैंडेट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फूड कमीशन अंडर सेक्शन 16। पर्पज क्या था? टू मॉनिटर एंड इवेलुएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, to hear grievances related to food distribution and nutrition. The act aims to provide subsidized food grains to approximately 2/3 of India's population. Ensures food security through public distribution systems. PDS ensures food. ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 23। स्टेट फूड कमीशन इसी से बना था। इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द स्टेट फूड कमीशन हैज़ क्वेसी जुडिशियल पावर्स एंड कैन इश्यू डायरेक्शन ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इसके पास मतलब क्वेसी जुडिशरी का पावर है। With reference to the consumer's right privileges under the provisions of law in India, which of the following statement is are correct? Consumers are empowered to take samples of food testing। बिल्कुल सही है। When a consumer file a complaint to any consumer forum, no fee is required to be paid। नहीं, nominal fees तो लगेगी। In the case of death of consumer, his or her legal hire can file a complaint to consumer forum on his या her behalf। बिल्कुल सही है। Consumers are empowered to take samples for food testing। The Consumer Protection Act 1986 empowered the consumer to take samples for Consumer Protection Act 1986। Consumer Protection Act 1986 involving food adulteration। With the introduction of Consumer Protection Act 2019, this right continues as consumer has the right to safety and informed choices। Food Safety and Standard Act 2006, Food Safety and Standard Act 2000 FSSAI, consumers can get food samples tested, but the process typically involve an authorized officer। एक authorized officer को involve करना पड़ेगा। No fee for filing a complaint। नहीं, nominal fee is required to file complaint in the consumer forum। The fee structure is based on value of goods and compensation claimed। Consumer Protection Act 2009, though the act provides easy filing method, it does not exempt the filing act fee।
इट डज नॉट एक्सेप्ट द फिलिंग फी, फॉर्म भरने का फीस नहीं लगता है। लीगल हायर कैन फाइल ए कंप्लेन अबाउट कंज्यूमर्स डेथ, बिल्कुल सही है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, if a consumer dies, the legal hire or representative can file or continue the complaint. This ensures the consumer rights are upheld even after death. With reference to the consumer dispute redressal at the district level in India, which one of the following statement is not correct? Not correct. District forum entertains complaint where the value of goods or services does not exceed rupees 50 lakh. डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले कब तक वो करते हैं? जब तक पैसा 50 लाख से ऊपर ना हो। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट विच इट डीम्स फिट, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी ए वोमेन, ये भी सही है। हाँ, as per Consumer Protection Act 2019, the District Consumer Dispute Redressal Commission entertains complaints where the value of goods and services paid as consideration does not exceed 20 or 50 लाख। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में वो किया जा रहा है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अर्लियर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट वॉज 20 lakhs, इससे पहले वो 20 लाख था, अब 50 लाख हो गया है। Section 28(1) of Consumer Protection Act 2019 authorizes state government to establish more than one district forum in a district needed to effective dispute resolution. Every district forum must include at least one woman member to ensure gender representative and inclusive justice delivery. Inclusive justice delivery. With reference to the consumer dispute redressal at the district level in India, which one of the following is correct? State government can establish more than one district in if it deems fit. Will say one of the members of district forum shall be a woman. District forum entertains complaints where the value of good of service does not exceed rupees 50 lakh. सही है। A complaint in relation to any goods sold or any services provided may be filed with a district forum by the state government as a representative of interest of consumer in general. ठीक है। State government can establish more than one consumer protection at 2019. वन वोमेन मतलब वन मेंबर वोमेन रहेंगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन in 1986 set the jurisdiction of the district forum to 20 lakh. However, consumer protection at 2019 has been increased to 50 lakh. The state government in the interest of consumer can file complaints regarding goods and services provided. The provision aims to safeguard public interest when mass grievances arise. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड 1986 वाला एक्ट, इंक्लूडिंग इनहेंस्ड पिक्यूनियर jurisdiction of district, state and national commission. Enhanced consumer rights such as right to live complaint electronically and easier grievances redressal mechanism. Easier redressal mechanism. Consumer rights include right to safety, right to information, right to redressal and right to consumer education. The act ensures timely and effective resolution of consumer disputes. District Consumer Disputes Redressal Commission act as the first tier in the consumer grievances redressal system. The monetary jurisdiction is up to rest 50 lakh. The state government can establish multiple forums for better accessibility. ठीक, तो ये हुआ अपना समाप्त। ठीक, थैंक यू।
बाय। अब तो नहीं कुछ बचा है, नहीं PYQs भी हो गए ख़त्म। ठीक, बाय।